Yes, Pakistan have won. Pakistan have beaten the mighty Aussies. I would request Aram, I would request Imad, I would request Tala and Kisa to put all of our hands together to clap our Pakistan team. Let's go, guys. Let's go. Yes. So this is a celebration party for Team Pakistan जिन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया को कम बैक करके ऑस्ट्रेलिया के अपने घर में backup yeah, Optus Plus should I say they have beaten them. They are what a day to be alive. Like 2 weeks of cricket, what they can do to you. इंग्लैंड को हमने अपने होम पे कम बैक करके मारा, अब ऑस्ट्रेलिया को उनके होम पे जाके मारा. So I am so much happy, so much happy because 3 weeks ago I was literally done with Pakistan cricket. But boy, oh boy, we have turned it around. We have turned it around. And sorry. Okay, so I would go straight towards Kisa. Biggest fan of Rizwan. Kisa से हमारी काफी के बाद यार पे बात हुई. It is quite right that we go straight to Kisa. Rizwan captain बने. Rizwan ने आते साथ ही पाकिस्तान को सीरीज जितवाई. So Kisa, first of all, thank you so much for joining. Second of all, बहुत सारी congratulations. How are you feeling? Thank you so much for having me. फीलिंग कुछ समझ नहीं आ रहा जब हम जीते तो लिटरली मुझे तो रोना आ रहा था कि ये हुआ क्या है ये कैसे हुआ है क्योंकि आई थिंक कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं भी बहुत नर्वस थी लाइक फर्स्ट सीरीज ऑफ रिजवान एज अ कैप्टन और दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया और जिस तरह से हमारा रिकॉर्ड था तो आई वाज सो नर्वस बट मुझे लगता है जितनी मुल्तान सुल्तान के लिए दुआएं की थी मैंने वो सब इधर अलग मैंने लगा दी और हम लोग जीत गए आउट ऑफ नोवेयर रिजवान वाज ब्रिलियंट एज अ कैप्टन आई मीन काफी टाइम बाद आपको टीम जब लगी एक ऐसी मतलब टीम वाज लाइक they were gelled and glued together. This one was just field placement and everything was just so perfect in this series. Uh, I hope he continues his those tactics and stuff like this and T20 as well. And बाकी मैं बस थोड़ा सा हार्श मैं हो जाती हूँ जब भी मेरे फेवरेट प्लेयर्स की बात है बट आई थिंक कि अगर हम लास्ट ओडीआई में अरफात महनाज से आमिर जमाल को थोड़ा सा चांस दे देते it would have been like just that's just my fan opinion but overall Rizwan was good team was good Babar looked better Shaheen was back Naseem was better Hassan मतलब कोई है ही नहीं सब भी अच्छे थे it was good overall Rightly, perfect, rightly. Okay, तला के पास चलते हैं. तला, how big a victory that is. 2002 के बाद series, like ODI series ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं. I was alive back then. I was like 4 or 5 years old. मुझे नहीं याद वो series. My elder brother used to tell me कि वकार यूनिट की कैप्टनसी में जीते. But very first time in my lifetime मैंने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में ODI series जीता देखिए. How big a victory is that and how are you feeling about it? Do touchdown on some key performance for you. It's a massive victory considering कि इतना अपहीवल हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में और इतने चेंजेस आए हैं पिछले एक साल में बट आई थिंक दिस रियली विंडिकेट्स दोज ऑफ अस जो वर्ल्ड कप के बाद ही कह रहे थे कि रिजवान को कैप्टन होना चाहिए एंड वी सॉ द डिफरेंस इन दिस सीरीज दैट गुड कैप्टनसी कैन मेक in terms of bowling performance and even batting performance. I think when you have a captain giving confidence to young players like Simon Abdullah and giving them a chance at the top of the order, despite the fact कि उनकी partnership इतनी अच्छी नहीं रही है पिछले 2 मैचेस से पहले I think double digits में भी नहीं पहुंचे थे. So despite all that, they got the confidence to play in Australia, which is the toughest place for Pakistani batters, and succeeded. So I think it really makes you optimistic for the Champions Trophy, and it's a historic win because we just don't win in Australia. So it's really a historic win. बिल्कुल ऐसा ही. और इमाद, मैं आपकी तरफ आता हूँ.
एक बात मैं इनपुट करना चाहता हूँ, ऐसे अचानक जहन में है कि जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें स्पिनर्स टुक द लाइमलाइट, वो नुमान और साजिद ने तकरीबन सारे के सारे विकेटें ले ली। तो इधर पेसर्स ने कहा होल्ड माय बेयर इन लिटल टर्म्स, शाहीन, हसनैन, हारिस टेकिंग ऑल दो सॉर्ट ऑफ विकेट्स। और जैसे तला ने बात की कि बैटर्स रियली stood up to the point, stood up to the business, एक ऑलराउंड टीम परफॉर्मेंस देखने को मिली which was really really heartwarming. So Imaj, your key takeaways आप किन परफॉर्मेंस पे टच ऑन करना चाहोगे? Yeah, I was just continue to what you were saying. If England Vice Series, my spinners made a comeback, and then in this series, Pacers turned up, and so that just really shows that all the resources that we have, they are really good, and we need to trust them. We need to trust them in their hard times. We need to trust them when they want to go play leagues. We need to trust them when the pitches are bad and they are not at fault. So वही वाली बात है कि this series has illustrated a very open fact कि जो you need to cherish these players, you need to cherish your bowlers. Sweet and short from Imad, as always. अरे हम आपकी तरफ आते हैं। आपने पाकिस्तान की किट पहनी, आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट एज वेल। सो अरब, आई रियली वांट के थोड़ा परफॉर्मेंस पे डीप डाउन जाना शुरू कर दे। आई रियली वांट टू स्टार्ट विद साइमन अब्दुल्ला, किस तरह से मैं यहाँ पे टेक लूंगा। आई रियली वांट टू स्टार्ट विद साइमन अब्दुल्ला। आई नो तरह ने थोड़ा टच ऑन कर दिया, बट मैन यार वो वाइब चेक उस्मान सिंह ने भी ट्वीट की, वो सईद अनवर के साथ वाइब चेक। I have seen him like सईद अनवर का 2003 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, but he was very much done with his cricket at that point. But boy oh boy, जो दूसरे मैच में इन पर्टिकुलर और तीसरे इनिंग में तीसरे मैच में भी बहुत अच्छी इनिंग खेली। एंड द वे अब्दुल्ला ने जो साइम अयूब को देख के ग्रीव इनटू हिज ऑन, जो उसके शॉट्स एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं, मैन आई रियली लव द combo and I really appreciate all of them guys, चाहे वो शान मसूद हो, जिसने भी बैक किया थ्रू आउट, बिकॉज एक फॉर्मेट के बेस पे हम दूसरे फॉर्मेट में ड्रॉप कर देते हैं। इवन टेस्ट में भी वो जो पहले टेस्ट में आई रियली मेंशन इन वन ऑफ आवर शोज के पहले टेस्ट मैच में साइम अयूब जैसे आउट हुआ, he could have easily been dropped if it had been any other player, if it had been any selection committee. So really big up to them, but आप प्लीज टच डाउन करो जो ओपनिंग पेयर थी और जो आपको उनकी क्वालिटीज इस सीरीज में पर्टिकुलर लगी। सो आरम, ओवर टू यू, और आल्सो कांग्रेचुलेशंस, बिग अप। Yeah, I feel it's a big day for Pakistan cricket on the whole. Particularly talking about the openers, आपने जैसे कहा कि अब्दुल्ला एंड साइम, it's an interesting point you made कि whether it's Shan Masood continuing it from the test matches, because we've seen many of the players, हमारे बहुत सारे ऐसे players हैं जो format mixing का basically शिकार हुआ। they have played certain in a certain way in a certain format, उसका उनको जो बदला दिया जाता है, if they're out of form in test cricket, they're dropped from ODIs and vice versa. So I think ये वाली बात आपने बहुत अच्छी की कि this is good that they persisted with both of them, and अगर आप टेक्निकली देखें तो both of them basically complemented each other greatly, कि एक किसी भी एक के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आने दिया कि it eventually led to their dismissals. So I think दोनों टेस्ट मैचेस में जो सेकंड एंड थर्ड वन, हम ये ODIs में सॉरी, हम ये बात कहेंगे कि it was very good to see both of them getting into the groove, making runs, but the way they made those runs, they got in, settled in the power play के initial overs थे, they realized that the ball is moving a bit, तो ये उस पे उन्होंने आई फील कि they even outplayed the Australian batters, and the most heartening part of today for me was listening to people like Adam Gilchrist and Mike Hussey on the comms, and they said कि Pakistan have not only outplayed Australia today, but they've even read the conditions and the match situation better than Australia in both the games. And I feel that this is the biggest compliment that any Pakistan team could have received from any player from the Aussie side. बिल्कुल ऐसे सो ग्रेटली पुट। तला ने भी आराम के देखा था कि 92 की किट पहन लिया, सो हैप्पी अबाउट इट। तला ने नहीं, एक मैं शो में असल पहनी थी में मुझे आज अजीब से लग रहा था कम। थोड़ा, क्योंकि अपने शो की यार रिकॉर्डिंग में भी मैंने पहनी होती है,
So I was like, it Yeah, yeah, doesn't feel right. It doesn't feel right to not pair yeah, it. yeah. तला ने अपने शो को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया एंड इट वाज लिटरली दैट शो जहां पे आपने पाकिस्तान की किट पहनी जो प्रोवाइडेड दैट वन लाइनर उसके बाद से हम दो टेस्ट मैच थे तला कमिंग बैक टूवर्ड्स जो किसा के बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं रिजवान की तरफ बात को स्विच करते हैं लेट्स हाईलाइट द पेसर्स पेस बैटरी लेट्स स्टार्ट विद हारिस रऊफ आई थिंक सो शायद मैं ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूं बट इट इज अ सेलिब्रेशन पार्टी लेट मी अलाउ इट ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे इतना अच्छा कंडीशंस को यूटिलाइजर मैंने शोएब अख्तर के बाद नहीं देखा लाइक आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर क्वाइट अ फ्यू टाइम लाइक 20 साल हो गए क्रिकेट देखते हुए आई स्टार्टर फॉर्मेट्स की बात करूं बिकॉज हारिस रऊफ एसेंशियली प्लेज इन टी20 आई एंड ओडीआई बिग बैश देख लो 2022 वाला वर्ल्ड he was really good और इधर like ऑस्ट्रेलिया टीम was literally 10 ओवर के बाद उनके वो क्या कहते हैं कम पे टांगना शुरू हो जाते हैं इन लिटरल मीनिंग सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हारिस रऊफ उसके बाद शाहीन का फॉर्म में वापस आना सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम पाकिस्तान इट वाज रियली हार्ड फॉर्मिंग और वो पेस यार essentially so पाकिस्तान क्रिकेट कमिंग फुल सर्कल सो तला have your thoughts on pacers from Haris Rauf to Hasnain of course मैंने थोड़ा मिस कर दिया था इनको so yeah have your thoughts हाँ, हारिस ने तो पहला मैच ही अपने होम ग्राउंड से शुरू किया था, सो ही गॉट कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट डेफिनेटली। yeah और इधर एक चीज़ नज़र आती है कि टी20 लीग्स के एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा होता है, बिकॉज ही न्यू एग्जैक्टली वेयर टू बॉल। so अगर true फॉर so true एग्जांपल शहीन का तो रोल अलग है, लेकिन थोड़ा नसीम से कंपेयर कर लें, वो सिमिलर लेंथ्स पे बॉलिंग करता है, तो नसीम से कंपेयर करें हारिस को, तो हारिस न्यू एग्जैक्टली वेयर टू पिच द बॉल and how to like change his length and line depending on which over or which batsman is bowling to. So he was really the perfect bowler to have in these conditions, in the perfect form. um, because I talked about this in the recording yesterday too, ke, he's not the kind of bowler जिसने under 16 से आके सब कुछ पूरे सिस्टम में खेल के सब कुछ सीखा है. He's a very instinct based bowler. So when he's in form, he's bowling like he's bowling without overthinking it, and he's bowling in the right conditions. He's unstoppable. और दूसरे ODI में against the full strength Australian 11, he blew them away with a fifer. और पहले ODI में भी अगर 20-30 रन और होते तो वो भी मैच जीत जाना था. So I think he had like the perfect series, one of the best series for I think a Pakistani pacer which I've seen in a long time. और शहीन की बात करें तो he looked very much improved with the new ball, especially third ODI में, the way he didn't like rely too much on his in swingers anymore. He's trying to take the ball away from the right hander as well. So I think it's great to see that he's adapting to the fact कि अभी वो हर ball 140 plus पे नहीं करवा सकता sadly, but I think he definitely has the skill to adapt and become a different kind of bowler, but still be very effective. And I think पिछले साल की फॉर्म देख के ऐसा लगता है कि he isn't that world class bowler anymore, but he still averages like 23 in ODIs with the ball. So he is definitely among the very best new ball bowlers in ODIs, in my opinion. Or I'd like to mention Naseem as well, because I don't think it was a good series, to be honest, for Naseem. He didn't look like perfectly fit, to be honest. He wasn't bowling at the at least in the first couple of matches, he wasn't bowling उस स्पेस पे जिस पे एक्सपेक्ट आप करते हैं कि वो बॉल करेगा न्यू बॉल से. और सेकंड स्पेल में भी आके ही even the second spell when he first spell maybe he wasn't as accurate as before. He used to bowl those test lengths, which made him like the kind of perfect new ball partner for Shaheen, because he is more of a defensive bowler. लेकिन इस सीरीज में काफी पावर प्ले में रन्स भी लीक किए थे. So I think that's something that can be improved in the next series, I guess. Filling in for Ahmed Bhai's absence, I'd like to take the same question to
the person who has the marvel of Pakistan cricket app on her profile picture. Because I would like you to give a rundown of your reflections of the bowling attack. I think तनहा ने सही बात की about Naseem. I mean, he was a bit off. मतलब थोड़ी लाइन लेंथ का भी इशू आ रहा था, but I think I would give him a benefit of doubt. थोड़ा हो जाता है. लेकिन yes, I mean, Hasnain का comeback अच्छा हुआ, and him getting Stones was the best part of the third ODI. I mean, इतना सुकून मिला मुझे वो चीज देख के he got Stones. और उसके अलावा रऊफ bowled very well. और जिस तरह तनहा ने बात की, like I mean, I will just continue कि भाई उसको थोड़ा एक्सपोजर था, एक्सपीरियंस था टू प्ले ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस, आई मीन बिग बैश हैव बिन बिग टाइम। उसके अलावा जो लाहौर कंदर्स के प्रोग्राम चलते रहते थे विद इन ऑस्ट्रेलिया, तो दैट हैपेंड एज वेल। आई मीन ही यूज्ड टू बॉल इन नेट्स एज वेल। इंडियन टीम को भी उसने नेट में बॉल किया था, सो ही हैड दैट एक्सपीरियंस और वो उसको आज काम आया। एंड ही इट विल गिव इट हिम बूस्टर, ताकि वो जो एशियन कंडीशन में थोड़ा स्ट्रगल करता है हारिस रऊफ, टू गेट ओवर दैट एज वेल। और जिस तरह से रिजवान ने यूटिलाइज किया रऊफ को, that was that was perfect as well. I mean, he knew कि हारिस को कब इंट्रोड्यूस कराना है, he knew शाइन को कब वापस लेके आना है, तो that had as well. उसके अलावा जो प्लान था, I mean, that short wicket was my favorite जो प्लेयर्स को किया था इन लोगों ने। Rizwan plays that fielder and he played the short ball थी and he played right into the hand of the fielder. That play was great. I mean, तो thing was perfect। और पहले भी यही पेसर्स थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो पर्सनली खुशी है वो शाइन की भी है। आई मीन ही वाज स्ट्रगलिंग, और फर्स्ट ओडीआई, सेकंड ओडीआई, थर्ड ओडीआई में ही लुक्ड सो बेटर। जिसका फर्स्ट फाइव जो उसका फर्स्ट स्पेल था, दैट वाज वेरी वेरी गुड। आई मीन, और जिस तरह से उसके दो तीन ओवर्स तो ऐसे थे कि बॉल टच ही नहीं हो रही थी ऑस्ट्रेलियन बैटर से। हालांकि उसका पेस उतना का था, लेकिन उसकी लाइन लेंथ थोड़ी बेहतरी थी, फुलर लेंथ उसने थोड़े काम किए। ही वाज अ बिट पेशेंट और ट्राइंग टू गो विद द प्रोसेस के थोड़ा इस तरह से ट्राई करता हूँ, थोड़ा इस तरह से ट्राई करता हूँ। तो यस, आई मीन शाइन्स कमबैक वाज द बेस्ट पार्ट, एंड आई थिंक नसीम वुड डू बेटर इन द नेक्स्ट सीरीज इंशाल्लाह। Yeah, something I'd like to add here would be that Shaheen के बारे में कहा जा रहा था कि just kick him out. I mean, it was ridiculous that notion कि आप शाहीन को out करते हैं. But yeah, Ahmed bhai is back. But before we move on towards him, Go on, Imad, go on. let's just move this conversation towards Arham. And can you please give us a rundown of your reflections of the bowling attack? Yeah, Imad, I feel कि most of the points are covered. एक जो I think the defining factor between the performances of Naseem and maybe Haris Rauf is the fact कि the different types of bowlers को different types of surfaces and conditions suit करती हैं. We've always known कि Haris Rauf, the lengths that he is comfortable in bowling with, whether he's bowling in Asia or in the in Australia, so he continues to bowl on those lengths. So it's easy for him to adapt to those conditions and gain the most reward out of it. Whereas agar aap, if you look at someone like Naseem, who tends to look at more on movement from the pitch or either from the air, तो उसके लिए थोड़ा सा difficult होता है. I agree with Talha कि I've also felt कि he's not completely fit, और वो जो पेस वाली बात की, he's not hitting his ceiling right now. And as soon as we see Naseem doing that, I think he'll be back to peak performance. वो जो एक period था of a year or so where he had that stable peak and he gave us wickets, bowled clinically, I think it will return once he regains some of his match fitness. I think कि उस पर थोड़ा सा वो था. बाकी तो आई थिंक हसनैन पे इतनी बात नहीं हुई है. आई फील कि हसनैन का जो कमबैक था, इट इज क्वाइट an underrated one. He's overshadowed by people like Haris Rauf right now. But I think Stoinis hold that. Stoinis he, hold he, that. Stoinis वाली अभी किसी ने बात की थी कि it was a perfect revenge for him, and I feel very happy for him. एक तो I felt कि the first ODI था, he did not get into the groove right, and we heard Wasim Akram talk about it in the comms as well. Very few things he makes sense right now, but one of those few things was कि Hasnain did not look in the groove in the first ODI. और उसके बाद I felt कि आज he was quite comfortable bowling. He had figured out his lengths, or I feel that going forward he needs to be in our four exponents of fast bowling.
बिल्कुल ऐसा ही है. Okay, I guess it is about the time that we put the spotlight, limelight on Mohammad Rizwan, the newly announced captain. किसा आपकी तरफ आते हैं? No better person to go. Let's start throwing flowers on the name of Rizwan. कहाँ से start लेना चाहते हैं? कैप्टनसी से, कैचेस से? Have your say. कैचेस से मुझे वो याद आ गया जहाँ वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता था 7 कैचेस लेके, और मैं बड़ी सुकून से बैठी थी कि रिजवान तो कैच किसा कर को वो लेगा, पूरी और जिंदगी में उसने भूल वही जाएगा. कैच और उसने वही कैच छोड़ दिया. एंड आई वाज लाइक यार ये और क्या हुआ. बट या रिजवान रिजवान हमेशा बिहाइंड द विकेट, आई मीन ही इज अ रिलायबल पर्सन, मतलब. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नो गलत रिव्यूज. डीआरएस बिल्कुल ठीक रहा रिजवान का. एक जापा जैम्पा वाला लिया था, शुड आई टेक रिव्यू, उसने ले लिया, देयर वाज फन पार्ट, बट उसका डीआरएस ड्रामेटिकली चेंज हो गया, मतलब एकदम क्या, मतलब सब कुछ समझ आ रहा था कि यार अभी मैंने रिव्यू नहीं लेना, अब मैंने लेना है. अब आउटसाइड पे जा रहा बॉल, अभी नहीं लगा, मतलब ही वाज ऑन Yeah, स्पॉट विद दैट डिसीजन एज वेल. उसके बाद कैप्टेंसी, जैसा मैंने बात की कि फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी. सेकंड ओडीआई, फर्स्ट ओडीआई में जहां वो ऑलमोस्ट डिफेंडेड 203 रन, जिसमें जहाँ पे उसने थर्ड मैन प्लेस किया था इरफान को, बिकॉज yeah. रऊफ का बॉल बहुत ही वो पिच की वजह से उसको बहुत बाउंस मिला था, पीछे एज बस बॉल टच होती थी, पीछे चौके वगैरह होते ही, प्लेस दैट फील्डर देयर. काफी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट थी, फील्ड चेंजेस अच्छी थी, बॉलिंग चेंजेस अच्छी थी. कोई स्पिनर का कोटा पूरा नहीं किया हमने. हमने कोई आगा को बॉलिंग नहीं दी, हमने साइम को बस थोड़ी सी बॉलिंग दे दी, बस थोड़ा चेक कर लिया. हमने कुछ फोर्स नहीं लाया कि बस सब स्पिनर्स रहते हैं, डेथ ओवर्स के लिए बचा लूं मैं पेसर्स. नो लाइक दिस, आई मीन इट वाज गुड. Go for the हर win डिसीजन and go अच्छा for था, the माशाल्लाह win. माशाल्लाह. और आई Yeah. होप कि इसी तरह रहे. तो जैसा हम भी रिजवान की तारीफ कर रहे हैं, सब उसकी तारीफ करते रहे. और दूसरी ये बात जो मुझे सबसे लगी कि मतलब जैसे ही मतलब सब कह रहे थे कि रिजवान कैप्टन बन रहा है, और मोस्ट ऑफ द फैंस एंड माय फ्रेंड्स वाज अनोइंग मी कि मुल्तान सुल्तान नहीं है, एंडी फ्लावर नहीं है, हैदर भाई नहीं है, अब्दुल रहमान नहीं है, कोई भी नहीं है. रिजवान एक्सपोज होगा, उसकी कैप्टनसी एक्सपोज होगी. मैंने कहा ओके ठीक है, देख लेंगे. बट ही वाज ग्रेट. नहीं नहीं. आई मीन फील्ड प्लेसमेंट अच्छी थी, सब कुछ, मतलब फॉर मी एज अ फैन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ठीक है, मतलब रिजवान ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है. और इट शॉर्ट कि जब आप एक प्रॉपर कैप्टन को एक रोल देते हो, केपीके से वो रोल कैप्टनसी करके आ रहा है, फिर पाकिस्तान, फिर उसने मुल्तान सुल्तान को किया, फिर उसने अभी रिसेंट चैंपियंस कप में भी अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था. तो यप, आई मीन जब आप एक प्रॉपर कैप्टन को कैप्टनसी मिलती है तो आपको चीजें नजर आती हैं, और वो हमें नजर भी आया कि भाई चीजें हो रही थी. एक पेपर कैप्टनसी नहीं थी, एक फोर्स कैप्टनसी नहीं थी. ही वाज मेकिंग डिसीजंस, ही वाज ऑनिंग इट एज वेल. सो गुड टू सी. आई मीन बहुत अच्छा लगा एज अ फैन, एज अ रिजवान फैन भी, एज अ पाकिस्तान फैन भी. Yes. Okay, इमाद, इसी पे थोड़ा कंटिन्यू करके फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में वी विल गो काइंड ऑफ टुवर्ड्स द रैप अप. रिजवान, आई मीन मेरे वैसे शायद किसी को जब बाबर ने भी ये सोचा होगा कि या मेरी कैप्टनसी में क्या होता था, ये रिव्यूज का कीड़ा अब किधर गया. मुझे वो आगा वाली बात भी याद है कि शान रिजवान को ट्रस्ट नहीं करता, डीआरएस में हमेशा आगा से पूछता है. तो अब शायद या शान भी ट्रस्ट कर ले. Yes, yes, yes. Aga is so good about that thing. I really like it. Okay, इमाद, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था. बीच में मैंने जो बात किसा से भी इंटरप्ट की, और आपने शायद ट्वीट की थी, शायद मैं उस तरफ भी बात लेके जाना चाह रहा था. डीपली जाएंगे बिकॉज अगेन इट हैज टू बी वाइड बेस्ड शो. आप कह रहे थे कि पेसर्स को ट्रस्ट करें. आई मीन एक तो वो किलर किलर की तरफ का है, किलर इंस्टिंक्ट के यार 32 ओवर में 35 ओवर में अगर हम गेम फिनिश कर सकते तो वाई ड्रैग इट. बाबा के साथ ये शो होता था, श्रीलंका के साथ पिछले साल एशिया कप, जस्ट वन एग्जांपल कि आप गेम ड्रैग किए जा रहे हो. दैट वाज रियली गुड टू सी कि आप मेन 4 पेसर्स के साथ के हो. ओके, डाउट्स है कि स्लो ओवर रेट हो जाएगा, फिफ्थ बॉलर कौन सा होगा, एक बॉलर का दिन बुरा चल गया, बट ही बैक देम विद गुड ऑप्शंस ऑफ कोर्स. वो बॉलर्स इटसेल्फ बहुत अच्छे हैं. और दूसरी बात, आई मीन बाबर का वही इशू आता था कि ही यूज्ड टू बी राइट दैट वो जो मोमेंटम बनता था पेसर्स के अराउंड ही बनता था, बट थ्रू आउट उस इनिंग्स को मोमेंटम वो सस्टेन नहीं कर पाता था बाबर ना. वंस दैट मोमेंटम गॉट ब्रोक अर्ली इनटू पावर प्ले, आपको विकेट्स मिले, देन इट इट ही वाज लिटरली मेंटली गॉन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा.
That was really heartwarming to see. और spin I know अभी ऑस्ट्रेलिया में यूज करना बनती भी नहीं है सच. It used to be Achilles heels for बाबर आजम. मुझे कभी नहीं याद बाबर आजम ने स्पिन के साथ हमें कोई मैच जितवाया. I can see it happening. मुल्तान सुल्तान में स्पिनर्स के साथ रिजवान जो करता ना, ओए ओए, एशिया में आने दो रिजवान को. He would be so good. I am just waiting कि रिजवान की एशिया में कैप्टनसी का बात है. So हमारा और ओसामा मीर again शेरवान लगता है, हमारा that's बासित डेल स्टेन लगता है यार, मतलब मुझे नहीं समझ आती उस बॉलिंग लाइनअप के उनमें साथ हम उनमें फाइनल दोनों खेले होते हैं। यार खुश मतलब दिल शाह विकटे रह जाते, बाकी छोड़ दो. खुश दिल नहीं शाह यार, विकटे. वैसे वैसे नहीं नहीं मुझे तो शेन वॉर ने तो आईपीएल का फाइनल जीता है, ओसामा मीर ने पीएसएल का फाइनल नहीं जीता। कोई बात नहीं यार, फाइनल छोड़ो, लेकिन वो मतलब पता है मैं ना हमेशा हर टूर्नामेंट से पहले सिर पकड़ के बैठी होती हूँ ये क्या बॉलिंग लाइनअप है, और जैसे ही हम टूर्नामेंट में जाते हैं यार मतलब एज हाँ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द लाइनअप वी लुक सो गुड, और अब फाइनल में हम फाइनल की हाँ बात नहीं करते, हमारा या सपना है और सेकंड आना। यस. एक टर्म मैं अभी नहीं यूज करूंगा, बाद में यूज करूंगा. इमाद, थोड़ा मेरे कंसर्न से मैंने शायद आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया था कि आई एम नॉट फुली bought into the idea कि जिस तरह रिजवान ने रोल एक्सेप्ट किया, बट हैविंग सेड इट ऑन द फील्ड टैक्टिक्स रियली गुड, और वो बहुत अच्छा लगा देख के. सो व्हाट वाज योर की टेक अवे, किन मोमेंट्स को आप हाईलाइट करना चाहोगे ड्यूरिंग द सीरीज, और प्रोजेक्शन आपको क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंडर रिजवान? Yeah, for the first time in many years, it just felt like a Pakistan की limited overs captaincy एक autopilot पे नहीं चल रही है. Because with Babar, you knew that he has a set formula and he's going to follow that. T20s में is a very famous 6-8-6 वाला formula. And then इसमें भी जो ये था कि जो middle overs में spinners को आना ही है, मतलब there's no other way. Yes. And a part bowling Iftikhar or any other part timer after in the 11th over ये भी जो होता था. So I mean, yeah, so Rizwan ki कोई proactive approach थी, and we could see that he knew कि if the bowlers are bowling well, I'm just gonna keep on using them because they're just gonna finish the game at the 30th over, and he identified that weakness of not having the fifth bowler and just to kill the game with four bowlers. I mean, that's like a proper. In 2010s there used to be a meme, Thug Life meme. Yeah, this is what Rizwan did. But yeah, talking So about this okay. Pakistan under Rizwan, I think I see Pakistan being under Rizwan's captaincy in all three formats. As we, if we look at things 2 years from now, he's just too good with his calls. And as you mentioned, that he hasn't even captained in his forte, which is Asia, right? So Yes. वहाँ पे जो है वो we will see a lot of things. We just need some structural changes in the lineup. Maybe one batter needs to go out for Yes. for a spin bowling all rounder. उसके हाँ. अलावा I think we're all set for this CD25. If we, नाम भी ले लो, कौन सा बैटर मस्ट गो आउट मत. I mean, Kamran Ghulam for Arafat Minas. हाँ. Yeah. Imad is अच्छा, अब brave. यहाँ पे Imad is सब brave. प्लीज माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते, रिजवान को नजर ना लगाओ, मैंने बहुत दुआएं की हैं, सब बोलो। That is मेरा mandatory. That is मेरा वैसे mandatory. थोड़ा सा कंसर्न अभी T20s पे है because हाँ, for T20 me में this जगह doesn't नहीं mean बनती रिजवान की, बाकी वो पाकिस्तान वाला जगह फॉर्मूला नहीं है बनती, नहीं later बनती। on. It's a जिसकी जगह celebration नहीं बनती episode. उसको कप्तान बना दो. और आई थिंक T20 में हमने सैम अयूब कभी नहीं रखा हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ तक हाँ वो आई बहुत थिंक गलत किया. T20 में। just baffling. Yeah. हाँ, बिल्कुल वो आप फिर सही. पाकिस्तान टीम है ना, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, आज ही हम आई परसों थिंक खेल रहे थे ऑनेस्टली ना। जी. चैंपियंस ट्रॉफी तक साइम को टी20 से बाहर ही रखो तो ठीक है, लाइक लेटिंग फोकस ऑन द लॉन्गर फॉर्मेट. हम्म, गेम नहीं ये यार टाइम भी ही नहीं एक मिलेगा फिर तो. गुड आइडिया। I think नहीं यार yeah, एक a lot of teams do that. वैसे यार वैसे जिम्बाब्वे के साथ T20 आ रहे हैं, 2 नॉक्स अच्छी लगी. यू आर इनटू द रन्स, चाहे 30 रन भी बनाता रहे, कैनवस खेलता रहे, यू आर इनटू द रन्स. आई वुड हैव, बट एनीवे आई डू गेट अदर साइड ऑफ थिंग्स एज वेल. अराफात मिनास T20 में अराफात मिनास है, अगर है तो उसको खिलाना चाहिए। हाँ है. आई ओडीआईज गेस में सो. आई गेस अब्रार अब्रार को ले आए हैं। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द लूप, तो मतलब
I'm talking about the experiments Yes, number करते yes. हैं. seven wala spot. Number seven wala spot has to be covered by an all-rounder. Na? I don't think you should हाँ play a back. ऑलराउंडर लाइक हाँ, हाँ मतलब हम्म, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन. मतलब आराफात मिनाज को आप ले सकते हो, मेहरान मुमताज है, या फिर पेस ऑलराउंडर ये आमिर जमाल. तो दे आर ऑप्शंस. यस. हाँ, मुझे वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे 2015 का वर्ल्ड कप मिसपान है वो साउथ अफ्रीका. इट वाज आइदर डोमिनी वो लाइक फाइन लेग पे पिच शॉर्ट बॉल का प्लान चल रहा था तो उधर एक प्लेयर प्लान किया था जो अभी किसा बाल गया तो आई वाज हैविंग फ्लैशबैक्स. वो रिजवान रियली रियली गुड. और कैप्टनसी के अलावा ग्लव्स वर्क 10 कैचेस थे माशाल्लाह सीरीज में. माशाल्लाह. या माशाल्लाह यस. फर्स्ट विकेट कीपर माशाल्लाह एवर टू माशाल्लाह डू इट. सो या लॉन्ग मे इट माशाल्लाह. कंटिन्यू एज पहले अ ही लॉन्ग मे 10 इट इंजर्ड हो गया, अब मैं कोई और इंजरी नहीं बर्दाश्त कर सकती. हाँ, आओ आओ ऐसे ही है क्रैम्स में वो भी अच्छा था देखने को. फाइनली लेट्स डिस्कस फ्यू मेनी थिंग्स. तला आपकी तरफ आता हूँ बिकॉज यू डू दिस थिंग्स रियली रियली गुड. इस पाकिस्तान क्रिकेट बैक ऑन ट्रैक या मकूरियल टैग हमारा वापस आ गया. वी कैन एक्सपेक्ट फ्यू लॉस वंस अगेन बिकॉज cricket board is not stable, stuff like that. We go into the T20 series. Of course वो चीजें मैटर नहीं करेंगे कि बोर्ड में क्या चल रहा है बिकॉज अभी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके भी काफी डाउट चल रहे हैं एंड दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ बमर ऑफ अ मोमेंट एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन. शायद चैंपियंस ट्रॉफी कंप्लीटली बाय चली जाए या इवन हाइब्रिड मॉडल इज so pathetic to accept. But having said it, we go into or T20 series really bouncing. मैंने किसा को अगले दिन भी कहा था. In this mode, Pakistan cricket team is the most nastiest team on the planet to face. So I am hopeful that we will continue the momentum into it. But still, T20 team itself, Rizwan himself, Babar himself needs to rise up to the occasion. So how do you see next few months, starting from the next few matches of the T20 series, and how do you see the bigger picture of Pakistan cricket? फिर wrap up करते हैं किस्सा के एक आधे शॉट के साथ. Yeah, I think honestly, Champions Trophy तक T20 की इतनी कोई relevance भी नहीं है, and it doesn't really matter whatever happens. so और glad you put जिम्बाब्वे it. वाली So glad सीरीज you में put it. स्पेशली उसमें कोई like not even Saim is part of that. तो आगा कैप्टन हाँ, होगा तो it will be just like pure experimentation. तो I think उस पर फोकस करने की जरूरत भी नहीं है. और ODIs पे बात आती है तो बहुत promising signs है because टैलेंट हमेशा से ही था. इस जनरेशन का बहुत टैलेंट है. We just needed like some kind of glue to hold it together and to use it properly. और अगर ये थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है और कैप्टनसी आ गई है रिजवान की एंड ही कैन यूटिलाइज दिस टैलेंट ऑफ दिस जनरेशन रियली वेल, तो इट्स डेफिनेटली रियली प्रॉमिसिंग फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी. सिर्फ थोड़े टेक्निकल चेंजेस करने पड़ेंगे. वो उसमें सिलेक्शन कमेटी पावर की बात भी आ yes, जाती है कि वो कौन किसको खिलाना चाहते हैं. So you हाँ, can't play Aga and Kamran both, and you need a spin all rounder. And yeah, हर ग्राउंड पे 4 पेसर्स भी नहीं खिला सकते. तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा. बट ओवरऑल आई वुड से डेफिनेटली, आई मीन ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने सीरीज जीती है तो यू कैंट डिनाई दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट ट्रैक. ये कभी भी नहीं होता. मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी में एक बार हुआ है जब मैं 2 साल का था. तो इफ़ यू विन इन yeah, ऑस्ट्रेलिया, और वो भी कोई बी टीम को नहीं हराया, मतलब पहले 2 मैचेस में फुल स्ट्रेंथ टीम ही थी. So if you win in Australia, you're definitely doing something right, and we need to keep doing this. Or when it comes to Test cricket, we just beat England. We got a confidence boost, and the Pacers got a confidence boost from this series, and they go to South Africa with a lot of confidence. हाँ, So you can be optimistic about that too. So short term, में बिल, for the next few months, I would definitely say we're on the right track. हाँ बिल्कुल. और मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहा था. तला ने ईयरली रिव्यू शो करना है इनटू दिसंबर जब हमारी ये वाली सीरीज एंड हो जाएंगी. हमने एक लाइक सितंबर में आई गेस शो किया था पिछले साल, पिछले सितंबर से सितंबर का. दैट वाज रियली डूम एंड ग्लोम बट आई डिड एंड इट अप ऑन पॉजिटिव नोट. मुझे लग रहा था कि वी माइट किक इनटू दिस थिंग. बट किसा वेंट ऑन टू से इवन बिगर थिंग्स इन प्राइवेट चैट विद मी. किसा ने I might be wrong, but she might be the only person in the Pakistan जिसने कहा था Pakistan would beat England टेस्ट सीरीज की बात करूं. So कैसा
आई एम रियली इंडेटेड। मैं दोबारा थ्रो बैक करना चाहता हूँ साजिद खान और नुमान अली को, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में लाइफ डाली। सो कैसा कंक्लूडिंग सेगमेंट है, पार्टिंग थॉट्स, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट? क्यों, जैसे मैंने आपने बताया, आई वाज रियली डिटैच्ड विद पाकिस्तान क्रिकेट। I was just doing stuff for the sake of it because we have to run our platform, we have to keep follow, we have to keep supporting our cricketers, but वो जो attachment होती है ना कि we are enjoying stuff like that, I was literally hate watching them at times, but वो जो अच्छे वाली फील्ड होती है, अच्छे वाली वाइब्स होती है, that is back. Kudos to Pakistan team, kudos to Pakistan management, गिलेस्पी का भी जितना रोल है। तो कैसा आपके पार्टिंग थॉट्स क्या? मुझे मोहम्मद आरिस वाली फीलिंग आ रही है। मैंने बोला था हम जीतेंगे। I told तो you मतलब so. मुझे था, मुझे याद है आपने मुझसे बांग्लादेश सीरीज वाली प्रेडिक्शन पूरी थी एंड मैंने कहा था कि हम बांग्लादेश वाली सीरीज हारेंगे और हम इंग्लैंड वाली सीरीज जीतेंगे, और ऐसा ही हुआ। Not और तब मेरे all. जेहन में कोई नहीं था कि नौमान आ जाएगा, साजिद आ जाएगा, आकिब आ जाएगा, लाइक नो, बट आई हैड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जीतेंगे और शान मसूद इंग्लैंड को जरूर हराएगा। एंड हमने हराया। इट वाज गुड सीरीज, बहुत मजा आया। 800 रन पड़े पहले टेस्ट में, उसके बाद कम बैक करना, वो भी टेस्ट सीरीज में, वो भी जब आप मुसलसल 3 साल से हारे हो। It was so good to see, और शान मसूद, आई मीन, फाइनली गेटिंग अ विन एज अ टेस्ट कैप्टन। जब भी मैं ट्विटर खोलती थी उसको गालियां पड़ी होती थी, and I was like, नहीं यार ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर शुक्र है हमने इंग्लैंड को Yeah. हराया। और यस, जिस तरह ने बात की कि काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा टीम को भी, कैप्टन को भी, प्लेयर्स को भी। आई मीन, और जिस तरह से कामरान खुराम का डेब्यू था, आई मीन रिप्लेसिंग बाबर आजम, और इतना प्रेशर और फैंस का प्रेशर, मीडिया प्रेशर, सबकी नजरें कामरान खुराम पे, एंड यू वेंट ऑन द बैट on like Pakistan won 19 for 2 and he played वो 100 रन गेनिंग, वो उसने मैच बनाया वहाँ थर्ड टेस्ट में। सबने, मतलब एक शान मसूद की भी अच्छी नॉक आ गई, शुक्र है आफ्टर सो मेनी 50s एंड गुड स्टार्ट ही कन्वर्टेड इट एज वेल। और साजिद और नौमान की जितनी भी तारीफ की जाए काम में, आई मीन साजिद खान, लाइक ही इज लाइक दिलेर बंदा है वो। he plays with full heart, full passion के बस पाकिस्तान के लिए खेलना है। he played like, इस तरह के प्लेयर्स जब आपकी टीम में हो तो जाहिर बात है आपको बहुत बूस्ट मिलता है। देन coming on to Australia and everyone up against us कि भाई it's not Multan and blah blah blah। और फिर हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया। फर्स्ट ओडीआई भी ऑलमोस्ट हमने उनको हरा दिया था, पुट अ ग्रेट Yeah. फाइट एंड जस्ट 203 ऑन द बोर्ड, और ऑस्ट्रेलिया ने वो फाइट बिल्कुल नहीं दिखाई। सो यस, आई मीन डे टाइम्स अहेड, इंशाल्लाह बस कुछ टेक्निकल डिसीजंस, जिस टाइम बाद ने कहा कि ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर, इस तरह से अगर हम इंट्रोड्यूस करा ले विद इन टाइम, तो आई थिंक वी कैन बी होपफुल, वी कैन ड्रीम अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल इंशाल्लाह। तो बस यहाँ से अब बस कुछ, ना कोई चेयरमैन चेंज हो, ना कोई कैप्टन चेंज हो, कुछ भी चेंज ना हो, दैट ना टीम सिलेक्शन कुछ हो रहा, बस इस तरह की कोई पंगे ना हो। तो आई होप वी कैन ड्रीम, और इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका में नीड बाबर आजम कम बैक एज वेल। टेस्ट में बाबर का कम बैक चाहिए मुझे, जो भी हो जाए। ये क्लिप उस तक पहुंचा दो।